All right, guys, let's start our session. Okay, let me share my screen. Okay, so I hope my screen is visible, right? Can anyone confirm? Yes. Yes, Visible. sir. Thank you so much. Thank you so much for confirmation. So once again, welcome you all in the GuiNet technology, and today our again live session, right? So we are going to have a discussion about the foundation of the firewalls, next generation firewalls. We'll try to understand what the all feature we having a next generation firewall और ये क्या-क्या कर सकती है, and how it is going to make our life easy in terms of the protecting our network infrastructures, right? Last class में we have done a discussion about the लॉक सिक्योरिटी की क्या हमारा फिजिकल सिक्योरिटी होता है, क्या हमारा लॉजिकल सिक्योरिटी होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन डिस्कशन, राइट? बट स्टिल वी आर डूइंग द फाउंडेशन थिंग. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीजें. यू शुड हैव वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू start your career in the Palo Alto Firewall or any other firewall, right? So before I start, I can see a lot of people are already joined. Anyone having any specific question to ask me before I can start the class? Anything? Then definitely we'll start the session. Or we are good to start. I can see a lot of people. Anyone having language problem? Anyone having like not able to understand Hindi, not able to understand English? Because the public session, so I want to respect everyone like emotions and the times. So just wanted to make sure like everyone understand everything. Okay. So please feel free to ask if you feel any question, right? Raise your hand, put your question or query in chat, and we'll definitely happy to help you all, right? Because this is open session and we are very collaborative and very open-minded, right? And I'm very open to answer any query. It's related to might be networking or firewalls हो सकता है, cyber securities हो सकता है, SD-WAN हो सकता है. It could be anything. So always feel free, right? To ask. Thanks, Hemant, for the asking for the English. Definitely we'll try to do Hindi and English both, and we'll try to understand each everything. Good evening, everyone. Sorry for being late. No problem, sir. Good evening. Evening. So let's start. Okay. So we done about discussion about the course, right? So what we are going to cover in this course, again, I'll just recap this just few minutes. Not I'm going to spend a lot of times on the course content and all. But still, we are not started, like we are not going to start today and next class even the official like module for the Palo Alto. These we are covering the foundation of the firewalls. Any firewall might be having a plan to learn the Cisco ASA Firewall, might be having a plan to learn about the Juniper Firewall, might be having a plan to learn about the any Checkpoint Firewall, FortiGate Firewall, you having the plan Palo Alto Firewall, XYZ, any firewall if you're having a plan to learn, right? You have to know basic concept of the firewall. Until you don't know why we are going to use the Palo Alto firewall or any other firewall or basic firewall, probably you're not able to, understand the core concepts, how it is going to work, right? So foundation is very important. If you want to build a very good building, your foundation should be very strong. Then only building can be sustained for the longer period of time. So this is my motive. I want to spend much and more times to just build good foundations for all my professionals colleagues, right? So हम एक अच्छी foundation यहाँ build करेंगे जिससे हम एक दूसरे की पूरी जो हमारी chronology है कि क्या हम करने वाले हैं, that we all are going to understand, right? So let's start without any further delay. We have done discussion about the what syllabus we are going to cover entire this session, right? In this particular module, that is a PCNSA and PCNSC. Also, we done discussion about the Gartner Magic Report. We discussed like why we should learn the Palo Alto Firewall and what are the leader available in the market, who leading the market in terms of the firewall services. So we having the Palo Alto Firewall, we having the FortiGate Firewall, we having the Checkpoint Firewalls. So these are the leaders in the market, and out of leader, the Palo Alto is leading the market. Also, we have done discussion in the previous session, right? Who missed that particular session? Again, it's an overview session. So we'll provide the session recording so you guys can, go through that so you understand in deeper side what module we are going to cover, right? So we're having a 3 modules in the Palo Alto portfolio. That is a Strata series of the PS series firewall. That is a Palo Alto Prisma Access. I'm not going to cover what is a Prisma, what is a Strata, and the Cortex XDR.
So these all products, and we are going to cover this Strata PS Ridge firewalls because यही हमारा course का basically content है. Prisma Access अलग होता है, Cortex XDR भी हमारा अलग होता है. Anyone asking anything? Good evening, sir. Good evening, Walid. Good evening. How are you? Fine, sir. Good. Thanks for joining. Okay. So basically, lot of things we have to understand, but it is going to be very slowly, right? And gradually we understand each and everything. Then we compare a lot of factors in terms of the checkpoint firewall, in terms of the Palo Alto firewall, in terms of the Cisco firewall with the Palo Alto, FortiGate in the Palo Alto, and we understand why we should select the Palo Alto firewall. Also, हमने बहुत सारे examples देखा था. I have given the very layman example like mobile phones, cars, like क्या क्या उसमें आप feature आप compare करते हो. किसी भी product को आप खरीदने जाते हो market में, तो what like you having in your mind before going to purchase. आप अपने pocket को देखते हो, how much money I have, and the budget you have, that is actually the product you are looking for. Is it going to fit in your budget? If not, then what is the alternative product you have? Usme kya feature and how it is going to help and meet your requirement. So same thing is going to happen in terms of the any hardware or software based products. That is a firewall we are referring here. So आपके इसी तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे maintain करना है, and that is going to cover each and everything in this way. Also, we discussed why we need a firewall, right? But we'll continue from here. Why we need a firewall and firewall किस तरीके की, मैंने एक layman example दिया था बहुत की, how the physical security and the logical security come in a picture. So physical security में किस तरीके से पूरी chronology बनती है कि आपके systems को, आपके infrastructures को कैसे you need a security design, like you having the security guards available in their offices, you having the access door controls, you having the ID cards, you having the asset management, you have to tag those assets. So अगर कोई लेके जाता है sensor आपके पास, उसको sense कर लेंगे, and that is going to be protected. So वो सारी चीजें we have done a discussion, and also we discuss कि how the logical security come in a picture, right? कि हमारे पास internet है यहाँ पे, and then your router is connected with the internet, and this is your system, right? And when it want to access the internet, so you having another gate available here, exit gate, and another gate was here, which is the physical gate कि यहाँ से आप human entry कर रहे हैं, किसी भी तरह का मतलब exercise हो रहा है, that is a physical activity. But when the computer is going to in and out from the internet via your exit gateway, which is your router, then how your communication is going to be protected, right? So this we have done a discussion in very detail, and we come to know whenever we are going to out from our organization, you having a lot of type of devices. Might be you having a security devices, you having a routers, you having a switches, you having a printers, you having a servers, WLC, AP, XYZ devices, computer, whatever you have, they all need to be crossed with the channels. That channel is going to be scan you, and after scanning, it is going to provide some kind of result. Whether you should go out, that means you are allowed, or you should be blocked. That means you are going to be denied, right? So any action is going to be happen, either blocked, either allowed. So अगर आपके कंप्यूटर का जो इंटरनेट एक्सेस है, अगर आप उसकी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, तो आपको वो प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो आपको डिनाई कर देता है, राइट? सो दिस फंडामेंटल्स वी हैव डन डिस्कशन. नाउ वी आर मूविंग वन स्टेप अहेड फ्रॉम हियर, राइट? सो कभी भी हम बात करते हैं, राइट, एनी टाइप ऑफ डिस्कशन इफ यू आर डूइंग, राइट, firewall and cyber security, we are keep discussing like firewall and cyber security, right? Firewall versus, if I am talking about the cyber security. So if someone is going to ask you what is the difference between firewall and cyber security, might be it's a very difficult question, or might be it's like a very easy question. It's totally depend how you having the understanding to answer these questions, right? So if I'm talking about the firewalls, so firewall, that is a simple definition. I would say anything, right? Anything, if you want to place in logical security for your network infrastructures, anything, I'm repeating the sentence, anything you want to place logical security. What is a logical security? Very important, guys. Logical security, right? One is a logical and one is a physical security. I discussed about this, right? Physical security. So if anything you want to place logical security to just protect your network infrastructures. So what are the network infrastructures? That could be your router,
right? That could be your switch, that could be your servers, that might be your printers, right? Might be you having a WLC, might be you're having access point, might be you having the IoT devices, etc. A lot of devices could be there in your organization. So if you want to protect them, then you require the logical security, right? So how the logical security? Your firewall is going to provide the logical security. That means if your any device want to exit from your organizations, that is your router, because router तो चाहिए होगा ना आपको, आपको अपने बाहर निकलना है कंपनी से, तो router having those connection कि जहां से आपका इंटरनेट कनेक्शन इज गोइंग टू बी टर्मिनेटेड. सो फायरवॉल भी हो सकता है, but just I'm giving the examples. This is the internet service provider, you can say like ISP, internet ISP, and you have taken the circuit from this ISP to this router, right? So let's say suppose this PC want to communicate with the internet. So this PC might be having one source IP address and one destination IP address. So this PC might be having this 192.168.10.10, and this is your source IP address, and this is your destination IP address. So destination could be anything. It is wanted to access the google.com. Sorry for that. Google.com. Is this Google should having any IP address like 45.4.2.2.4, any IP address is going to be happen. So once this packet is going to land, from this PC to this router doesn't having the, security kind of the, mechanism. They're having the very basic security. So still we can provide the logical security. We are talking about the logical security. This point we are talking. This router still can provide the logical security in terms of whenever the packet is going to be come on the router, we can apply the ACLs. These ACLs, right, access control list, this is going to check based on the source IP address, right, based on the destination IP address, based on the port numbers, right, or might be the protocols as well. But totally depend which type of ACL you are using. Again, ACL having a two flavors: standard ACLs versus extended ACLs. So if you are going to use extended ACL, you'll get the more feature. If you are going to use the standard ACL, probably you'll get the less features, right? So you have to be, very good understanding about the ACL as well. So at least आप कुछ protection दे सकते हो. There is a high chance you can protect your network, but it is not like very capable device who can protect everything. They can provide the basic logical security, but not all the security, whatever you're looking for. So if you want to place the security which is as per your intent, मतलब जो मैं चाहता हूँ, intent means networking, intent based security. So that only going to possible by the using of the device that is known as the firewall, but not a simple firewall. We known as the next generation firewalls. So today we having a topic also, the next generation firewall understanding. So that's why I'm explaining. So next generation firewall is going to meet your all intent based security features, whatever you want to apply to just, allow or deny the connections. Why? Because it's having the many criteria. These firewalls can do a lot of things. So I just define here, you having the one packet. And यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीजें दिख रही हैं, source IP address and destination IP address. This is the L3 packet, we can say. ये हमारा जो packet है, ये हमारा L3 packet है. But ऐसा real production में नहीं होता है. It is not something you can say कि आपका ये real production में ऐसा होता है. It is never going to happen such way in the real productions. The packet which is originated from the PC, they having a lot of informations. That packet having a lot of informations. Let me just draw one of the packet types so you guys can understand at least. What are the all field we having in the packet? I'm just going to give you the idea so you guys can understand. So this is the one packet, right? And trust me, whatever I'm going to write it here, I'm going to prove in my labs while doing this session, okay? So if you draw this packet, so I'm just drawing some fields and let me fill it out. Okay, so let me just fill this information. So we should have the source MAC, right? We should have the destination MAC. We should have the source IP address.
we should have the destination IP address. We having the source port, right? We having a destination port. We having the application ID, right? Just or let me just write from here. So app ID, right? In addition of that, we having the many more fields, which probably you are not going to understand, but I'm just writing it here. And in last, you having the payload. What is a payload? Actual content, actual data. So actual data which you are just wanted to send. What could be the any Excel attachment, any email content you are writing in the email body. This is your actual content. और किसी तरीके का आप कोई PDF file भेज रहे हो, that could be the also possible. So it could be anything, right? It could be anything, whatever you want, it is going to be happen, and it is going to be applied inside your packet. So that is your actual content, actual payload is going to be happen. So if I talk about this packet, this is known as the layer 2 information. This entire field is known as the layer 2 information. This field is known as the layer 3 information, right? This is known as the layer 4 information. This is known as the layer 7 informations. This is actual your content. This is known as the content, right? Any attachment could be. And why I just mention here multiple field, it is going to relevant for you. So there could be the user ID. You don't know about what is the user ID, so I'm not going to explain. It might be you just having to use some kind of the device ID also, right? Device ID. Might be you're just going to use some URL also, right? So these are the different field are going to be even captured. So the next generation firewalls, they understand each and every sections. They are going to understand. They understand your MAC. They understand your IP. They understand your ports, that is source and destination. They understand your application. Any application could be the Facebook. Facebook use kar sakte ho, right? You might be going to use a Facebook, any WhatsApp. They understand. YouTube, all application is going to understand. Any device, कि आप कौन से डिवाइस से बात कर रहे हो? आप आईफोन से टॉक कर रहे हो, राइट? या आपके पास लेनोवो का डिवाइस है, या आपके पास डेल का डिवाइस है, कुछ भी डिवाइस, क्या ओएस है, दैट इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाई. किस यूआरएल को आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर, नॉट एप्लीकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूआरएल. हो सकता है कि आप www.guinet.com से बात करना चाह रहे हो. दिस इज अगेन a URL. So you're talking about the guinet.com. That's the URL, right? And the next one is the actual payload, actual content. So every parameters, every communication, right? Yes, Khan is asking, can they understand the voice and video content? So definitely, see, voice and video content cannot be inspected because they are in form of the UDP packet. They are not going to be recognized because voice is just, calling. So they are not going to decrypt it. They are not going to be understand because they are the all UDP traffic. But whatever you are doing the TCP based traffic, they all are going to be understand. So we don't have the capability till now the next generation firewall to understand the voice and video content in terms of the while doing this streamings. Okay, so the any attachment, whatever you have, any URL, whatever you have, they're going to understand, and based on that, it is going to apply the policies. So how it is going to happen? So जब मैं यहाँ router लगाया था, so when the router was there, it having the limited kind of the feature. They understand the source and destination port and protocol, only the 4 features they are understanding. And similar, our legacy firewall also having a similar kind of the steps. So we having a 2 kind of the firewall. One is the like old firewall, we can say legacy firewall, and one is a new firewall that is known as the next generation firewall. I'll discuss about the stateful and stateless inspection later on, probably in the next session. We'll discuss about this. Then I'll explain how they function, all the stateful firewall and stateless firewall, and see if possible, we'll try to cover today as well. So that means if you having any kind of the firewall, right, old or new, so new having the much and more feature in compared to the old firewalls. They can provide a lot of informations, they can inspect a lot of information, and based on that inspection, they are going to take an actions. So I mean to say,
When the packet, same packet is going to land again, and you having the logical security apply here, and this time you having a device as a firewall. So this firewall is going to check each and every parameters which packet is going to come via this PC to this particular interface. So once the packet is going to land, because the firewall is now before your internet router, so firewall is going to check, hey, are you coming with this particular MAC address? Are you allowed to go on the internet? If you answer is yes, I'm allowed, then you can go. It is going to check next, this IP is allowed or not. So that IP is allowed. This particular application you are trying to access, is it really allow your from your company? You can access the Facebook or WhatsApp. If answer is yes, then it is going to process that. If no, then it is going to be dropped right away from here. So anything which is going to be processed via the firewall, the inspection is going to happen. Full inspection is going to happen of this particular packet, and based on the inspection, whether the packet is going to be out or simply they are going to be dropped. Similar, what URL you are accessing might be the data you are sending or uploading on the internet or downloading from the internet. They having any sensitive information, might be they having the malware, they having the virus, they having a content, anything which is like you are leaking from your company. So data leak. So those steps also going to be throughout checks from the firewall, and firewall is going to be make sure none of the compliance from your company point of view should cross without your permissions. So everything, any packet, even you, whatever you're doing in the browser, that is also going to be monitored. Nowadays, technology is changing very fast. You're having the browser control features available, not in the firewall, but most of the proxy-based solutions. So even whatever the activity you are doing in the browser, in HTTP header, HTTP cookies, everything is going to be inspected. And based on the inspection, they are taking the action in different ways. So you can save your network precisely whatever you want. You want my employees should not access Facebook during my business hour, you can block the Facebook. You want my employees should know any not access any dating website, you can block all dating website. You want to block all games website, you can block all the games website. So all possible, just you need to put your right intent. If you are putting your right intent, that all is going to be possible. Okay, so your next generation firewall, when you place your next generation firewall, it is going to provide logical security, and while providing a logical security, it is going to completely inspect everything, whatever you're doing communication from in to out. And similar way, when the reply is going to come from the internet, okay, when you send any packet and your internet based server is going to reply to you. So before this reply reaches to you on this particular PC, this firewall again check this reply. It does not mean you are sending something, then only firewall is checking. No, your flow is going out once it has been checked. But when the flow is get reply from the internet, it is again going to be checked. What kind of attachment you are downloading from the internet? Is there any kind of the virus, any kind of trojans, any kind of the like sensitive information, vulnerability, anywhere in the spying activity? So those steps is also going to be checked. And after checking those steps, whether if the firewall is found you are applicable to go inside, then it is allowed, else it is simply going to be drop you. So in and out, complete policy is going to be checked. This is the beauty of the next generation firewall, right? So I hope you guys having the basic understanding what is a basic function of the firewalls. Anything you want to protect from your logical security point of view for your networks, that firewall is basically going to help you out, right? Now the question is coming here. Meanwhile, guys, any question till now here? Anyone having? Because I spoke around 21 to 23 minutes. Any question anyone having? पूछ सकते हो आप लोग, हिंदी इंग्लिश कुछ भी पूछ सकते हो. I don't have any issue. I can see almost 27 people are here. So if you're having any question, then it's fine. No, then we can move ahead. We can move ahead. Thank you. Thank you so much. So now let's move on the cyber security. So firewall, we understand what is a firewall, what is the functionality, how it is going to help you out. Now cyber security, if you discuss about the cyber security, it's a very broader
like I can say word. It's not a very small thing. Cyber security having the very broader pictures. But can I go in the cyber security if I don't have the firewalls? Can I go in the cyber security if I don't have the firewall skill? If I don't have the networking skills? The two component we have here. Understand clearly, guys. So network. Hello, namaste, sir. Namaste, very namaste. Is this I'm asking about question, sir. Is it suitable? कि मतलब जैसे राउटिंग एंड स्विचिंग है तो उससे इजीली मूव होना आसान रहेगा सर सिक्योरिटी में? That's a very good question. So I will definitely come on this. So आपका question बहुत अच्छा है and let me just answer your question as well. So वही मैं बताने और इसके अलावा कोई question आपका और is it only question कि routing switching से? Sir, actually is routing switching is a hard line and मतलब it's हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में पूछो, कोई दिक्कत नहीं, I can understand, you're trying very best. हाँ पूछिए, कोई दिक्कत नहीं. मेरे कहने का मतलब है सर ये थोड़ा हार्ड लाइन है राउटिंग एंड स्विचिंग, और इसमें एक्चुअली जो सिक्योरिटी है मतलब जितना भी अब तक चल रहा है आजकल लोग सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा स्विच कर रहे हैं, वैकेंसीज भी ज़्यादा ही हैं, तो ऐसा क्या हम करें जिससे हम सिक्योरिटी के अंदर हम अच्छा बेनिफिट्स और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें? ओके, थैंक यू सार्थक फॉर आस्किंग. पहली बात कि नेटवर्किंग हुआ एंड सिक्योरिटी हुआ, राइट, दोनों ही हार्ड नहीं है, बहुत इजी है सीखने के लिए. पहली बात अपने माइंड में एक एक्सेप्टेंस लाओ कि बोथ आर वेरी इजी एंड आई कैन डू. देयर इज नो चांस यू कैन से कि बहुत हार्ड मैं सीख नहीं सकता. नो, आपको ये बोलना आई कैन डू और मैं इसको सीख सकता हूँ. देयर इज नो कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड. पहली बात, कोडिंग आपको नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स आपको नहीं चाहिए. अलजेब्रा आपने जो बनाया है इसमें फिजिक्स के जो फॉर्मूला होते हैं, अलजेब्रा जो होते हैं, मैथमेटिक्स के और केमिस्ट्री के जो फॉर्मूला होते हैं, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, राइट. सो दीज आर समथिंग कि आप अपनी जो जिंदगी में डेली यूज करते हो ना चीजों को, वही चीज आपको पढ़ना है. आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट यूज करते हो, जस्ट थिंक अबाउट कि मेरे मोबाइल पे इंटरनेट कैसे चलता है, कैसे मैं यूट्यूब चलाता हूँ. यू ट्राई टू फिगर आउट दोज आंसर्स. एंड मेरे मोबाइल पे कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तो दूसरा क्यों नहीं उसको हैक कर पाता है? यू हैव टू फाइंड दोज आंसर. मेरी ईमेल्स को कोई दूसरा हैक क्यों नहीं कर पाता? जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे मोबाइल पे इंटरनेट कैसे चलता है, यू विल लर्न द नेटवर्किंग कंपोनेंट. जैसे आपको पता चल जाएगा कि मेरे मोबाइल पे जो मैसेजेस आते हैं दूसरा कोई हैक नहीं कर पाता है, तो आपको वहां पे सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. सो इट सर जहां तक मुझे भी लगता है कि आई एम सो सॉरी डिस्टर्ब, बीच में टोक रहा हूँ, राउटिंग एंड स्विचिंग इज द बेस ऑफ फायरवॉल एंड सिक्योरिटी. क्योंकि अगर आपको राउटिंग स्विचिंग नहीं आती तो आप फायरवॉल में और सिक्योरिटी में हमेशा आगे अटकोगे. हाँ एग्जैक्टली. सो जो मुझे लगता है बिल्कुल 100% सही है, यू आर 100% राइट. सो इसलिए मैं आ रहा था साइबर सिक्योरिटी पे. तो मैं यही इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या मेरे पास साइबर सिक्योरिटी बनने के लिए क्या मेरे को फायरवॉल आना चाहिए, क्या मुझे नेटवर्किंग आना चाहिए, सिक्योरिटी कंपोनेंट. सो द बेस और द लाइक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बोलूं, आपको अगर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, राइट, तो देयर इज अ मैंडेटरी थिंग्स यू शुड नो. आपको नेटवर्किंग भी आनी चाहिए और आपको सिक्योरिटी भी आनी चाहिए. तो नेटवर्किंग की मैं बात करता हूं तो बेसिक नेटवर्किंग एटलीस्ट आपको CCNA लेवल का नॉलेज आना चाहिए. अलोंग विद दैट कोई भी एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. देन यू कैन मूव योरसेल्फ इन साइबर सिक्योरिटी. दिस इज द ब्रॉडर थिंग आई एम टेलिंग. इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई एम टेलिंग कि अगर सच में अपने आप को साइबर सिक्योरिटी में ले जाना है तो उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको नेटवर्किंग तो आनी चाहिए. इवन यू आर गोइंग इन द फायरवॉल, स्टिल आई एम रिकमेंडिंग एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर आपको कोई भी फायरवॉल सीखना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप CCNA जरूर करो. क्योंकि फायरवॉल के अंदर यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द राउटिंग्स. मैं सारा करके दिखाऊंगा कोर्स करने. इसके अंदर आपको VLAN समझना है, आपको इसके अंदर OSPF चलाना है, आपको इसके अंदर BGP चलाना है, आपके इसके अंदर स्टैटिक राउट चलाना है. सो अगर आपको यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं आती, सॉरी OSPF को मैं गलत लिख दिया, let me just OSPF. सो अगर ये सारी चीजें आपको नहीं आती है एंड यू आर द फायरवॉल इंजीनियर, राइट, you are the firewall engineer. So how basically you are going to do all these stuff? Because these are the part of my syllabus. मैं ये सारी चीजें कराता हूँ, राउटिंग कराता हूँ, VLAN कराता हूँ, OSPF कराता हूँ, BGP कराता हूँ. मैं
पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं बताता हूँ, बट हाउ द फायरवॉल ऑन द Palo Alto Firewall, आपका BGP कैसे कॉन्फ़िगर होगा, redistribution कैसे होगा, OSPF कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा, VLANs कैसे, इंटर-VLAN राउटिंग कैसे होती है, these all you have to understand. So Sarthak, coming to you, you are coming from the network background, you met one criteria already. You have CCNA knowledge, that means you are eligible to start your career with the Palo Alto Firewall or any other firewall vendor. और एक चीज बताता हूँ आपको, कोई भी फायरवॉल स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है तो यू कैन इजिली लर्न एनी ऑफ द फायरवॉल, इजिली लर्न। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि Palo Alto मुझे या कोई अदर फायरवॉल करना है तो मेरे लिए कुछ फायरवॉल का कोई कोर्स होता है, देयर इज नो कोर्स। आप अपना बेसिक नेटवर्किंग फंडामेंटल क्लियर रखो एंड देन यू कैन स्टार्ट एनी फायरवॉल। आपको चेक पॉइंट करना हो कर लो, आपको FortiGate करना वो कर लो, आपको LTM पढ़ना वो पढ़ लो। LTM इज लोड बैलेंसर नॉट अ फायरवॉल, बट आप कर सकते हो। आपको कोई क्लाउड फायरवॉल पढ़ना हो उसको पढ़ लो, you can do anything, but you should having the basic fundamental knowledge in networking and the security. अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो, so if you wanted to become a cyber security engineer, then you just have to these all fundamentals very clear. अब हम बात करते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी का जो जॉब्स होता है, राइट, साइबर सिक्योरिटी का जॉब्स होता है, let me just clear the screens so you guys can understand now. So अगर मैं बात करता हूँ कि जो मेरी साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं हम, so let me just write it here, cyber security. Okay, so इसकी जो हमारे पास जो एक्चुअल जो हमारा डोमेन होता है साइबर सिक्योरिटी का, और एक्चुअल हमारे पास, अगेन let me just put it here, the firewall and most probably next gen firewall. So यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट होता है साइबर सिक्योरिटी वर्सेस नेक्स्ट जेन फायरवॉल, so देखो बहुत सारे सिमिलरिटीज दोनों प्रोफाइल में होती है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होते हो वहां पर भी आपको फायरवॉल को ही यूज किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी इज वन डोमेन, बट फायरवॉल इज वन प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू यूज इन दैट डोमेन। Cyber security is one domain, networking routers which is the part of the product which is going to use in the cyber security domain. Cyber security is a one domain. Inside of cyber security, a server might be going to be used. Your any kind of the firewalls, routers, switch, they all are the part of cyber security, because cyber security is a broader word. Inside of cyber security, we having the all networking security component which needs to be protected in terms of the any kind of the threats, any kind of the malware activity, any kind of the ransomware attack, any kind of the spyware attack, right? So हमारे पास एनी काइंड ऑफ द बॉटनेट अटैक हमारे पास हो गया, हमारे पास किसी तरह का ट्रोजन का अटैक हो गया, किसी तरह का वायरस का अटैक हो गया, किसी तरह का डीडोस जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं। अगर ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं किसी डिवाइस पे, किसी नेटवर्किंग डिवाइस पे, ना आई वांट टू प्रोटेक्ट देम, सो आई नीड अ firewalls. I need a cyber security solution should be placed inside of my organization. वो solution कहाँ से आएगा? हमें तो आएगा नहीं। You need a device, you need a product, वो आपको firewalls provide करती है, वो आपको proxy provide करता है. So these are the cyber security. Cyber security basically the broader work inside of security. हमारे पास बहुत type के engineers होते हैं, नेटवर्क के भी होते हैं, आपके फायरवॉल्स के होते हैं, दे ऑल वर्क टुगेदर एंड दे हैविंग अ रिस्पांसिबिलिटी टू सिक्योर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी काइंड ऑफ द अटैक। सो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इधर अपनी स्लाइड पे ले आता हूँ। लेट मी जस्ट मूव ऑन माय स्लाइड सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। देखो, सो जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो साइबर सिक्योरिटी में होता क्या है कि आपके पास साइबर अटैक्स होते हैं, राइट? साइबर अटैक्स आपके कई तरीके के हो सकते हैं। तो साइबर अटैक को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? Who is going to protect? So आपके मोस्ट कॉमन जो दो सॉल्यूशंस हैं टू प्रोटेक्ट द साइबर सिक्योरिटी, एक होता है आपका प्रॉक्सी और दूसरा आप यूज कर सकते हो नॉट फायरवॉल, दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग के दिमाग में रखना है बात को, फायरवॉल इज लाइक लेगेसी वन। सो प्रॉक्सी सॉल्यूशन यूज कर सकते हो या आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। व्हेनेवर यू गोइंग फॉर द प्रॉक्सी सॉल्यूशन, हमारे पास क्या प्रॉक्सी के मेन वेंडर क्या हमारे पास है? प्रॉक्सी सॉल्यूशन के आज के डेट में हमारे पास जो मेन वेंडर्स हमारे पास हैं, दैट इज Zscaler इज लीडिंग इन द मार्केट, दैट इज GIA सॉल्यूशन, राइट? ये हमारे पास सबसे लीडिंग मार्केट है। दूसरा हमारे पास प्रिज्मा एक्सेस है जो हमारे पास किसका, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द Palo Alto। सो यू कैन थिंक अबाउट सिस्को के पास भी ऐसा नहीं है, सिस्को का भी अपना है बहुत सॉल्यूशन, सिक्योरिटी का सॉल्यूशन, उसको भी यूज कर सकते हैं। बाकी अब अभी हमारा नेट स्पोक भी आ गया है और भी वेंडर्स हैं जो यूज कर रहे हैं, बट दीज आर द क्वाइट पॉपुलर एंड ट्रस्ट मी Zscaler is like leading in the market,
कोई भी इसके आसपास नहीं है, इवन Palo Alto भी नहीं है इसके आसपास. So these are the proxy solution. इनका काम होता है कि your organization should be well protected from the any kind of the threats, any kind of cyber attacks, any kind of the like I can say कुछ भी कोई ransomware होता है, spyware होता है, सब तरीके से आपको उसको प्रोटेक्ट करना. सेम चीज फायरवॉल इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोवाइड अ सॉल्यूशन. अभी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है, वो भी आपको ऐसे ही प्रोवाइड करती है. तो अब बात आती है कि सर मैं प्रॉक्सी किस सॉल्यूशन में यूज करूं और किस केस में फायरवॉल यूज करूं, राइट? तो बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन होता है कि हम प्रॉक्सी कब यूज करें, फायरवॉल कब यूज करें. तो देखो ये डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ द नेचर ऑफ ट्रैफिक यू वांट टू यूज. सो आज की डेट में अगर Zscaler की बात करूं तो अर्लियर व्हेन Zscaler वर डिजाइन, सो ये सिर्फ आपका वेब ट्रैफिक सपोर्ट करता था. वेब ट्रैफिक मतलब क्या? आपका वेब ट्रैफिक होता है HTTP और HTTPS, मतलब जो ब्राउजर बेस आप जो भी कोई URL को एक्सेस करते हो, दोज ट्रैफिक इज ओनली गोइंग टू सपोर्टेड बाय Zscaler अर्लियर, जिसको हम एक हमारे पास टर्म होता था टनल 1.0 सॉल्यूशन जिसको डिफाइन किया था. बट नाउ जो Zscaler सॉल्यूशन है इक्विवेलेंट टू द फायरवॉल्स, कोई भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल उठा लो, आप Zscaler सॉल्यूशन ले लो, इट्स लाइक द जीरो ट्रस्ट नेटवर्क आपको देता है. तो अगर आपको फायरवॉल नहीं डिप्लॉय करना, मत लो. आप don't have the any requirement, you use a Zscaler solution which having the firewalls plus proxy both, and additionally they can going to understand HTTP plus HTTPS plus any other ports and protocol traffics. So ये पहले नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया. इन्होंने दूसरा टनल बनाया, टनल 2.0. इसके अंदर दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द फुल व्यू, right? You can do the HTTP, you can do the HTTPS, you can do like any port protocol based communication. And now if you're taking the single solution from Zscaler, trust me, no need to take any firewall. आप कहीं से भी काम कर रहे हो, you're working from the anywhere in the world. आप एरोप्लेन से वर्क कर रहे हो, आप किसी कैफे में बैठ के काम कर रहे हो, आप किसी बीच पे बैठ के काम कर रहे हो, आप किसी हॉलीडे स्टेशन पे गए वहां से काम कर रहे हो, आप ऑफिस से काम कर रहे हो, you are going to get similar kind of the security policy while accessing all the your company applications, all the cloud based application, all the data center based hosted applications और all any web applications. किसी भी तरीके का आप कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो, then you are going to get solution like that कि आपको कहीं से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. So the Zscaler having the market cap is a very large right now, right? ट्रस्ट में इतनी ज्यादा उसकी मार्केट कैप हो गई कि पूरा सिक्योरिटी डोमेन को लगभग उसने सप्रेस कर दिया है इन टर्म ऑफ द प्रॉक्सी और प्लस अपना एडवांस फायरवॉल सॉल्यूशन की वजह से. बट स्टिल Palo Alto is again having this feature. So इसके भी कुछ limitations हैं कि you cannot send like NATed traffic directly from their local breakout to any destination. अगर आप proxy यूज करते हो तो there is a limitations कि आपको साइट के जितने भी ट्रैफिक है you just have to send all the Zscaler first and then Zscaler will make a connection on behalf of you. So proxy का ही solution होता है कि आप पहले proxy को दो, proxy आपके behalf पे, proxy का मतलब यही होता है कि आपके behalf पे कोई communicate करता है, right? So this is how proxy is going to work. But if you want to go locally, then it is not possible via the proxy solutions. Then you require the firewalls. So firewall में क्या होता है कि आपको अगर locally किसी destination में जाना है तो यहाँ पे या यहाँ से NAT होकर आपके destination पे चला गया and you access the internet. So this is how it is going to work in the firewall solution. And same thing, like you want to inspect any kind of traffic, like it based on the layer 7, layer 3, layer 4, port protocols, URL, applications, content, everything is going to be protected within the firewall. So if I say proxy plus firewall nowadays are going to provide a similar kind of a security, even I'm talking about the next generation firewall. Additionally, proxy having some kind of the advantage कि वहां पे आपको जितने भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस है, कैश भी सॉल्यूशन वहां पे यूज होता है, इनलाइन डेटा आपको वहां मॉनिटरिंग हो जाती है, कोई भी SaaS एप्लीकेशन आप यूज करते हो, still they are going to provide everything like in term of the very good holistic kind of security parameters जहां पे आपका सारा कुछ protected होता है. Firewall भी same चीज कर सकती है when you are going to use in conjunction of the SD-WAN solutions. So it's totally depend how your organization is going to adopt the solutions. But दोनों ही केस में you can achieve everything. So अगर आप cyber security use कर रहे हो तो you just have to depend on these two products, right?
either proxy, either firewall or both. Many company use both क्योंकि उनका कुछ कुछ अपना requirement होता है. Then you are going to protect your organization with all cyber attacks. और ये अटैक क्या क्या हो सकते हैं? Just viewer, phishing एक अटैक होता है, एक मालवेयर होता है, ये भी एक अटैक होता है, एक रैंसमवेयर होता है, आपने सुना होगा, ये भी अटैक होता है, एक स्पाईवेयर होता है, ये भी अटैक होता है. तो एक एक चीज थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं. फिशिंग क्या करता है? फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग का मतलब ये होता है कि by use of the phishing attack, they just going to try to get your informations, right? कि जैसे आपका कोई यूजर नेम कोई मेरे को चाहिए, आपका ईमेल आईडी का यूजर नेम क्या है, आई जस्ट वांट टू गेट योर पासवर्ड, योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, मेरे को उससे कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करना है, मुझे आपका क्रेडिट कार्ड से पैसे मतलब चुराने हैं, आई कैन से पासवर्ड से आप ईमेल मुझे कुछ हैक करना है. सो दिस इज द फिशिंग. उसमें होता क्या है कि कुछ आपको अटैचमेंट आते हैं, उस पर आप क्लिक करते हो, और जैसे आप लोग कई बार देखा होगा कि यू वॉन द लॉटरी ऑफ दिस मच अमाउंट, आप कई बार ऐसा मैसेज आता है. एंड इवन trust me, one time what happened with me, I was traveling in somewhere in the train, okay, and I got suddenly message ki your credit card rewards point is 5000 and available, you need to just redeem it. मैं सोचा यार मेरे पास SBI का क्रेडिट कार्ड है and then I want to redeem it, so मैंने उस पर क्लिक कर दिया and I was in different mindset. मैंने मेरे सामने एक फॉर्म खुल गया, ट्रस्ट में, और उस फॉर्म के अंदर उसने पहले पूछा कि व्हाट इज योर क्रेडिट कार्ड, मैंने क्रेडिट कार्ड डाल दिया. फिर पूछा कि नहीं पहले नाम पूछा, नेम मैंने डाल दिया, देन इट वाज लाइक व्हाट इज योर क्रेडिट कार्ड नंबर, मैंने वो डाल दिया. देन अगेन आस्क व्हाट इज योर सीवी नंबर, मैंने वो भी डाल दिया. एक्सपायरी डेट मैंने वो भी डाल दिया. मैंने मोबाइल पूछा, वो भी डाल दिया. उसके पूछा कि आपका ओटीपी आया होगा, वो डाल दो, मैंने वो भी डाल दिया. एंड देन व्हेन आई पुट द ओटीपी एंड देन आई रियलाइज आई मेक ब्लंडर. ट्रस्ट मी, आई मेक अ ब्लंडर. And I was in travel and I was like मैं पूरे मेरे body sweat होने लगी कि because the credit card having the good limit, and I just put it everything, and then I realized I did like something which is not good for me. ट्रेन में नेटवर्क भी नहीं था and I suddenly asking the mobiles for someone कि भाई दे दो कैसे कैसे, और मैं जैसे जैसे कस्टमर केयर को फोन मिला and I immediately block my card, भाई इसको अभी ब्लॉक करो. सो वो कभी कभी माइंडसेट ऐसा होता है कि आदमी थोड़े से मतलब पीपल आर वेरी क्रेजी, कुछ आपको फ्री मिलता है कि चलो रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल गए, 5000 के मैं शॉपिंग कर लूंगा या कुछ बर्गर पिज्जा खा लूंगा, काइंड ऑफ स्टफ. सो पीपल who doing this phishing activity, actually they trying to attempt something by using them, like they get some information from you. So आप लोग ऐसी चीजों से बहुत बच के रहना है, राइट. सो दिस इज अ वेरी कॉमन, कई बार आप लोग ईमेल भी आता होगा, राइट. सो इस तरीके की चीजें आपकी होती रहती है, राइट. दूसरा हमारे पास जो होता है, that is a malware. So when I talk about the malware, malicious software, it is going to install in your systems, right? आप कुछ फाइल डाउनलोड करते हो, उसके अंदर malware होता है, आप उसको इंस्टॉल करते हो कुकीज के फॉर्म में, एड ऑन के फॉर्म में, they are going to install in your system. And जब वो सिस्टम में आपका इंस्टॉल हो जाता है, right? So they are just going to your spread that malware across your LAN infrastructures, और उसकी वजह से आपका पूरा डेटा जो है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, आपका नेटवर्क पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है. तो अगेन यू आर लूजिंग योर बिजनेस, यू आर लूजिंग योर डेटा. इस रैंसमवेयर अटैक होता है, राइट. अब रैंसमवेयर अटैक क्या करता है? ये क्या करता है कि सपोज मेरा एक कंप्यूटर है एंड इफ आई गेट द रैंसमवेयर अटैक, किसी तरीके से दे पुट सम मालवेयर इन सॉफ्टवेयर माय पीसी, और उसके अंदर उन्होंने रैंसमवेयर अटैक डाल दिया. सो दे आर बेसिकली encrypt the data which is hosted in my computer. Ransomware, whenever a ransomware attack is going to happen, they basically encrypt the data which is which is going to available in my system. आपके सर्वर में कोई डेटा हो सकता है, राइट. आपके कोई ड्राइव हो सकता है, जैसे मेरी ड्राइव है, मान के चलो कि आई एम गिविंग द ट्रेनिंग्स एंड आई एम जस्ट हैविंग दिस डी ड्राइव, लॉट ऑफ मटेरियल आई हैव, राइट. और इस फोल्डर को किसी ने इनक्रिप्ट कर दिया. अब मेरे पास तो बहुत क्रूशियल डेटा है, मेरे पास पूरी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हैं, मेरे ट्रेनिंग मटेरियल्स हैं, मैंने कितने सालों की मेहनत किया है, राइट. बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरे पास कॉन्टेंट्स हैं. सो अगर ये किसी तरीके से रैंसमवेयर अटैक हुआ, दे लॉक माय फोल्डर, दे एनक्रिप्ट माय डेटा, मैं उसको खोलूंगा, खुलेगा ही नहीं. सो अब क्या होगा? दे आस्क मनी, कि आप मुझे दोगे पैसे तब मैं आपको ये दूंगा, राइट. सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ. देखो जो भी अटैक होते हैं ना, रुको मैं आप लोग को दिखाता हूँ, उसके कुछ मोटिवेशंस होते हैं. आई कम द पॉइंट अगेन, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मैं कई बार इमोशनल हो जाता हूँ आप लोग को बताने के लिए. सो मैं आप लोग को एसडी बैंक की ट्रेनिंग में ले चलता हूँ.
So let me just go there where I was. SD-WAN security. No, this one. So कोई भी हमारा अटैक होता है ना, थ्रेट लैंडस्केप, इसके कुछ रीजन्स होते हैं, राइट? रीजन्स क्या हो सकते हैं कि जैसे अभी नेशनल स्टेट स्पॉन्सर्ड, जैसे अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में हमारा वॉर चल रहा है. देयर इज टू काइंड ऑफ वॉर इज गोइंग ऑन. वन इज अ फिजिकल वॉर, जिसमें एयरप्लेन को किल कर रहे हैं या फिर वो अपने बॉम्ब्स को एक दूसरे पे सिटी पे गिरा रहे हैं. दैट इज अ वन वे ऑफ द डिस्ट्रॉइंग द कंट्री. उससे भी उनका नुकसान हो रहा है. अनदर वॉर इज गोइंग ऑन, इज साइबर वॉर. साइबर वॉर से क्या हुआ कि उनके बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने हैक कर लिया. लो जी, सारे पैसे तुम्हारे गायब कर दिया. अब तुम ऐसी, जब कोई किसी का पैसा ही कोई ले लेगा तो यू आर गोइंग टू लूज एवरीथिंग. आपका में पूरा डेटा ही, जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा एम्स, दैट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया, वी कैन से दैट, राइट? हेल्थ, उसके पूरे डेटा हैक हो गए थे. पूरा सर्वर, पूरा डेटाबेस, सब कुछ पूरा हैक हो गया. इवन मतलब रिसेंटली न्यूज में तो नहीं आया, बट इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली वी नो दैट कि अभी तक वो रिकवर नहीं हुए हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. कुछ कुछ उन्होंने जुगाड़ से रिकवर किया है, बट नॉट एवरीथिंग. सो नेशनल स्टेट स्पॉन्सर्ड भी साइबर क्राइम हमारे पास होते हैं. साइबर वॉरफेयर होता है, जैसे कंट्री के बीच में हम चलता है कि इनको डिस्ट्रॉय करना है. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी होता है, टारगेटेड अटैक. जैसे मान के चलो कि एक एग्जांपल देता हूँ कि आई एम इन द मॉल and there is two hypermarket, right? Just think about, one is the D-Mart and another is might be having the Reliance one. Just what a big bazaar, we can, it's closed, but just think about the big bazaar. There two I can say the big bazaar and the D-Mart, we can say hypermart is available in the mall. So मेरे को आया कि मैं कुछ क्राइम करूं, क्या क्राइम का रीजन हो सकता है? अब ये दो हैं. अब बिग बाजार को लगता है कि डी मार्ट में बहुत ज्यादा लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए और मेरा ना कस्टमर बेस थोड़ा सा कम है एंड आई एम लूजिंग माय बिजनेस. दोनों ने इक्वली इन्वेस्टमेंट कर रखा सा, 100 करोड़ रुपए इन्हें लगा रखा पूरा एक अपना सेटअप करने, बट ही इज सेलिंग लॉट ऑफ लाइक, बिकॉज इसका कस्टमर बेस, कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट जो भी बहुत अच्छा है, बट बिग बाजार को लगता है कि आई वांट टू डिस्ट्रॉय डी मार्ट. सो इट कुड बी go anything, like it can contact with the cyber criminals. वो कांटेक्ट करेगा साइबर क्रिमिनल से, उनको बोलेगा कि लो तुमको मैं दिया 1 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, जो भी ऑफर करना चाहे, 1 मिलियन, 2 मिलियंस. और इसके जो नेटवर्किंग सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम, इसको डिस्ट्रॉय कर दो आप. सो द मोमेंट इट इज गोइंग टू बी हैपन, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टारगेटेड अटैक. कि इसके पास 100 कस्टमर क्यू में लगे हुए हैं, 100 customers are in the queue for the grocery billing purchase, right? और इसके पास 5 हैं अभी, right? 5 हैं, but they are in the 100 queue, but suddenly इसकी बिलिंग बंद हो गई. There is no billing happening because आपका पूरा सिस्टम हैक हो गया. अब जब बिलिंग बंद हो गया तो ये कस्टमर जो अपने घर से आया मॉल के अंदर, इसको किसी को माइट बी राइस, समवन नीड टू परचेज, किसी को वेजिटेबल खरीदना है, किसी को अदर ग्रोसरी, दे स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, व्हाई आई एम स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर 30 मिनट एंड 1 hour. So they gradually shift their customer base from here, and once the customer will come here, his sale is going to be increased. इसका सेल बढ़ गया तो इट्स गेटिंग अ बेनिफिट, राइट? उसने पैसा दिया उसको 1 लाख रुपीज, बट इट इज गेटिंग अ मोर एंड मोर बेनिफिट्स, राइट? कि उसको क्या वहां पे मिल रहा है. सो इस तरीके से बेसिकली आपके ऑर्गेनाइज जो क्राइम होते हैं, टारगेटेड अटैक होते हैं, वो आपको बेसिकली इस तरह के देखने को मिलते हैं, राइट? सो एक मिनट, लेट मी सी हु इज टॉकिंग. ओके, सो ये आपके ऑर्गेनाइज क्राइम भी हो सकते हैं. रैंसमवेयर, दिस इज अगेन जो इनक्रिप्ट करता है. फाइनेंशियली मोटिवेटेड, ये इसके अंदर भी आ सकता है. या मैं किसी से पर्सनली आई वांट टू जस्ट, मेरे को आपसे कोई दुश्मनी है एंड आई वांट टू जस्ट डिस्ट्रॉय योर मनी, और मुझसे आपसे पैसे लेने हैं, तो मैं आपको मतलब आपको या तो किसी को पैसे देकर या मैं खुद ही आप पे अटैक करके या मतलब उससे मेरा कुछ बेनिफिट हो. तो ये सारे रीजन होते हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान होता है. सो दीज आर द लैंडस्केप्स, जो थ्रेट्स के रीजन होते हैं वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, और इसके कारण की जो रीजन होता है, हर क्राइम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है. दीज कुड बी द रीजंस, राइट? और कुछ पॉपुलर आपके पास जो अटैक्स हुए हैं आज तक, जैसे डिनायल ऑफ सर्विसेज हुआ, राइट? रैंसमवेयर हुआ, मालवेयर हुआ, आईकी वर्जन जैसे आईपी सेक का हुआ, याहू डेटा ब्रीच हुआ. दीज आर द पॉपुलर स्टफ बिकॉज ऑफ द आपका
साइबर सिक्योरिटी का जो आपका मतलब मेथड था, दैट वाज द वीक. सो कमिंग टू द स्लाइड अगेन. सो इसी तरीके से ransomware that is going to encrypt your all data, and after doing the encryption it is going to destroy each and everything. So this is a cyber security kind of the ransomware जो आपका बहुत कॉमन थी. अगेन ये साइबर अटैक के अंदर आता है. स्पाईवेयर क्या होता है? बस स्पाईवेयर का काम ये होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर ताक झांक करना, राइट. इट्स गोइंग टू डू अ स्पाइंग एक्टिविटी कि कुछ फाइल आपका एंड द थिंग्स व्हाटएवर आई एम टॉकिंग, राइट. आई एम गोइंग टू प्रूफ इन माय लैब्स आल्सो. सी, दीज आर द पार्ट ऑफ माय लैब्स. सो इट्स नॉट लाइक थ्योरी. अभी आप इसको थ्योरी समझो. अगेन विल रिकैप इट हियर. सारी चीजें हम यहाँ पे लैब में करेंगे एंड आई विल प्रूफ ईच एंड एवरीथिंग हाउ इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट विद द Palo Alto Firewall. सी, सो जस्ट फॉर द रिमाइंडर कि हम आगे सारी चीजें हम लैब्स में करेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू कि आप लोगों को एक फंडामेंटल्स पता होना चाहिए कि साइबर अटैक्स क्या होते हैं और किस तरह के अटैक्स होते हैं, एंड हाउ वी शुड बी वेरी कॉशियस टू अपने आप को कैसे अलर्टनेस रखना चाहिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हमें सेफ रखना चाहिए. क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी बनने जा रहे हो, क्योंकि आप फायरवॉल सीखोगे तो यू विल बिकम द फायरवॉल इंजीनियर, ऑल्सो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी आप बन जाओगे बाय डिफॉल्ट. आपके पास एक डिग्री आ जाएगी कि आप साइबर सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे. जैसे फायरवॉल सीखोगे वैसे ही. So you should know, you should be very precise. अगर कोई पूछता है कि you know cyber security, yes I know cyber security. मैं जानता हूँ कि फिशिंग क्या होता है, malware कैसे होता है, ransomware कैसे होता है, spyware क्या होता है, इसको कैसे ब्लॉक करते हैं. These are the only part of cyber security, cyber attacks. So spyware is like something is going to monitor my systems और वहां से मेरा डेटा को वो मतलब गैदर करेगा, राइट. कुछ भी मोबाइल फोन्स होता है, कोई कंप्यूटर होता है, और डेटा को वो बेसिकली क्लोजली मॉनिटर करके उसके बेसिस पे वो किसी न किसी तरीके का हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा. तो स्पाईवेयर जस्ट काइंड ऑफ द जस्ट डूइंग द स्पाइंग एक्टिविटी इन माय मशीन्स, माय सर्वर, माय डेटा, वो करना. ट्रोजन्स लाइक समथिंग लाइक कि एक तरह का आप लोग नॉर्मल जो वायरस होता है, वायरस और ट्रोजन्स यू कैन से लाइक सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ कि आपके कंप्यूटर में आ जाता है, प्रोग्राम में इंस्टॉल होता है, प्रोग्राम फाइल में इंस्टॉल हो जाता है, और दे आर कीप इंक्रीजिंग. जैसे वायरस आ जाने से आपकी फाइल नहीं खुलती है, करप्ट हो जाती है, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, राइट. तो वो आपके एक तरीके से मालवेयर का ही टाइप है, और उसकी वजह से आपका जो सिस्टम है दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू बी डिग्रेडेड. और ये एक तरीके का मतलब कहीं ना कहीं आपके जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाता है. अभी इसलिए आप कंप्यूटर में जब भी खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, तो यू इंस्टॉल द ट्रोजन्स के आप या एंटीवायरस, वायरस, आप जो भी है ये सब इंस्टॉल करते हो ताकि मेरा सिस्टम, मेरे सर्वर्स जो हैं they cannot download any hidden and harmful files जिसमें हमारे सिस्टम को मतलब करप्ट कर दें, राइट. सो ट्रोजन, वायरस, ये सारी चीजें भी अगेन मालवेयर के पार्ट हैं. दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय समथिंग इन योर नेटवर्क और सिस्टम. दूसरी चीज होती है डीडोस. अब डीडोस क्या होता है? डीडोस एक ऐसा अटैक होता है कि लेट्स अज्यूम दैट कि मान के चलो कि आपका एक कंपनी है, राइट, और आपकी कंपनी में बहुत सारे डिवाइस हैं. सो आपकी कंपनी में मान के चलो कि दिस इज योर राउटर, राइट, सॉरी. सो मान के चलो कि दिस इज योर राउटर. ये राउटर कनेक्टेड है हमारा इंटरनेट से, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है. एंड दिस इज योर लैन इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके पीछे हमारा लैन है, सॉरी, दिस इज माय लैन. सो डीडोस अटैक में होता क्या है कि मान के चलो कि ये मेरा कोई हैकर यहाँ बैठा हुआ है. जस्ट थिंक अबाउट, यहाँ पे कोई हैकर बैठा हुआ है. सो अगेन मैं चाहता हूँ कि आपके जो कम्युनिकेशन हो रहा है किसी भी तरह का बिजनेस में हो, यू आर डूइंग एनी बिजनेस, आई डोंट केयर, बट हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि आपका बिजनेस है ना वो डिस्टर्ब हो जाए. जैसे मान के चलो कि आप बैंक का ही बिजनेस कर रहे हो. अब बैंक का जब बिजनेस आप कर रहे हो तो आपके लोग बहुत सारे क्यू में खड़े हैं यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शंस करने के लिए. पैसे किसी को निकालना है, किसी को डालना है, किसी को चेक लेना है, किसी को कुछ और अलग अलग एक्टिविटी करना है उनको, राइट. So they are having a different purpose in the bank, and if you want to like सब कुछ स्मूथ चले तो आपके बैंकिंग सिस्टम के जो आपके जो पैरामीटर्स हैं उसको, जो नॉर्म्स हैं उसको आप अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा. बट समहाउ इट इज नॉट मेंटेन्ड, और किसी बंदा ने जो यहाँ पे हैकिंग के लिए बैठा हुआ है, राइट, इसने क्या किया कि डॉस अटैक कर दिया. डॉस अटैक में होता क्या है कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पे आपका 100 MPS का बैंडविड्थ है और आपके यहाँ से 50 MPS का ट्रैफिक जा रहा है, इंटरनेट पे इन एंड आउट हो रहा है, स्टिल यू हैविंग अ 50 MPS बफर. बट कोई इंटरनेट पे बैठा हुआ बंदा, इसने आपको 150 MPS का ट्रैफिक भेज दिया इस इंटरफेस पे.
अब 150 इंटरफेस ट्रैफिक हैज बीन लैंडेड ऑन योर इंटरफेस। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि योर यूटिलाइजेशन इज गोइंग टू बी मोर देन 100% और इक्वल टू 100%। योर यूटिलाइजेशन इज गोइंग टू बी 100%। And if your utilization is going to be 100%, you probably not able to process anything. मतलब आपका जो इन से आउट का ट्रैफिक है, that is not going to possible. Out to in ट्रैफिक है, that is also not going to possible. क्योंकि आपका सब कुछ चौक हो गया, सब कुछ चौक हो गया, मतलब आपके पूरे रिसोर्सेस खा गया वो अटैकर ने। अटैक इसने ना आपका कोई मालवेयर डाला, ना आपका सिस्टम हैक किया, ना आपका कोई वायरस डाला, ना उसने कोई अटैचमेंट फिशिंग मेल किया, बट स्टिल यू आर डिस्टर्ब। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? कि उसने किसी तरह का कोई अटैक नहीं किया, उसी तरह का अटैक नहीं किया, ना वायरस, ना ट्रोजन, ना वॉर्म, ना एडवेयर, ना स्पाईवेयर, कुछ भी, ना बॉटनेट, ये सारे किसी भी एक्टिविटी को नहीं किया, लेकिन उसने डीडोस किया। डीडोस से आपका रिसोर्स इज गोइंग टू बी ब्लॉक एंड यू आर हेल्पलेस। यू आर हेल्पलेस। सो यू शुड आल्सो नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर नेटवर्क फ्रॉम एनी डॉस और डीडोस अटैक। सो ये साइबर सिक्योरिटी जब भी हम बात करते हैं, तो जो भी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, दे हैविंग द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ऑल। दे अंडरस्टैंड द फिशिंग, they understand the malware, they should know how to protect from the malware, they should know how to protect from the vulnerability or ransomware attack, they should know how to protect from the spyware, and they know how to protect from the Trojan virus, DDoS, और जितने भी अटैक्स होते हैं, वायरस, अनवांटेड एप्लीकेशन, इनको फिल्टर करने आपको आना चाहिए। वॉर्म्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, और जो हमारे रिस्क पेज होते हैं, बॉटनेट होते हैं, मैलिशियस एक्टिव कंटेंट, फ्रॉड प्रोटेक्शन होता है, अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS होता है, सस्पिशियस डेस्टिनेशन, ये सारी चीजें आपका प्रोटेक्ट होना चाहिए। So these are the part of the cyber security. So if you are want to become the cyber security, again you should know the basic fundamental of the firewall. अगर आपको firewall नहीं आती है, then you probably not become a very good cyber security engineers. कहीं ना कहीं आपको सीखना ही पड़ेगा, right? So this is what I wanted to cover in today's session. मैं आप लोगों को try किया कि I'll give the basic fundamentals of next generation firewall. I'll try to give the good idea of the cyber security. I try to compare both of the features, firewall and cyber security के domains क्या होते हैं, मैं example देके बताने की कोशिश किया। Now it's your turns, guys. You can ask any question from me, and I'll try to answer those queries. Feel free to ask anything. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रणवीर कुमार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, बताइए। सर अगर हमारे पास कंपनी में या कहीं पर भी डीडोस अटैक होता है तो हम पता कैसे करेंगे कि हमारे पास डीडोस हुआ? पता कैसे करेंगे डीडोस अटैक हो? रैंसम में तो ये होता है, रैंसमवेयर में तो ये होता है कि सर हमारी फाइल इनक्रिप्टेड हो जाती है तो हमें पता लग जाता है, लेकिन सर अगर डीडोस होता है, डीडोस भी होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। डीडोस अटैक होगा, सो यू विल कम टू नो कि आपके जो भी कम्युनिकेशन होगा सारा ब्लॉक हो जाएगा, आप कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाओगे, कोई पेज नहीं खुलेगा, सो आपकी पूरी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन खत्म हो जाएगी। सो द ओनली वे, जब आपके पास डीडोस प्रोटेक्शन नहीं है एंड सडनली आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक रिसीव हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, इंटरफेस पे दो तरह के हमारे पास होते हैं ना, जैसे मैं एक मिनट लैब खोल लेता हूँ, पता नहीं लैब मैंने चालू नहीं किया है, बट आप लोग को लैब दिखाता हूँ जो आप लोग। लेकिन सर कंपनी में क्या होता है कि अगर कोई विंडो अपडेट लगा देता है और कुछ लगा तो भी हमारा यूटिलाइजेशन हाई चला जाता है सर उसको, तो वो वो अगर हम हाँ, मॉनिटर करते हैं तो वो भी हाई दिखाता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारे पास अगर कोई पैचिंग हो रही है, दैट इज गोइंग टू शो द हाई, वो हमारे पास दिखाएगा। बट लेट मी जस्ट ओपन द वन ऑफ द लैब टोपोलॉजी जो आप लोग करोगे। सो एक क्वेश्चन है। यस प्लीज आस्क। वो थोड़ा सा फीचर वाला है, एक्चुअली मुझसे इंट्रो में पूछा था कि अगर एचए में एक्टिव पैसिव में अगर मेरी एक्टिव फायरवॉल का अगर मैं ओएस अपडेट कर रहा हूँ तो क्या वो ओएस अपडेट सेकंड फायरवॉल में जाएगा या नहीं जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन, आपने क्या आंसर दिया? देखो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर एक्टिव और पैसिव अगर होना है तो अगर ओएस में अगर मैच नहीं करता तो दोनों में एक्टिव और पैसिव हो नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और देखी थी कि एचए के अंदर सिर्फ और सिर्फ एचए कॉन्फ़िगरेशन ही जो होती है जो आपस में सिंक्रोनाइज होती है, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज होती है। तो मेरे हिसाब से अगर ओएस अपडेट हो रहा है
तो वो अपडेट हो जाना चाहिए। नहीं, HA कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट दैट OS इज ऑलवेज लोकल टू द फायरवॉल। ओके, लोकल टू द फायरवॉल, OS हमेशा आपका लोकल टू द फायरवॉल होता है। हाँ मतलब कि मेरे लॉजिकली ये मेरा आंसर एक तरह से ठीक था कि भी अगर OS अगर मिसमैच हो तो दोनों में सिंक्रोनाइजेशन हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा ना, HA के तो पहले रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपका बिल्कुल, जब तक बिल्कुल, बिल्कुल। HA ही अपनी आएगा ना OS, क्योंकि प्री रिक्विजिट ही है। आई थिंक यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था, HA क्लास में थे ना आप हमारी? हाँ हाँ मैं था, तभी मैंने हाँ दे पाया। तो हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी। अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जो हमारा आता है कैसे पता चलेगा, तो यू आर राइट रणवीर कि हमारे पास जो डिवाइस होते हैं, तो हमारे पास अपलिंक, कभी हमारे पास पैचेज अपडेट होते रहते हैं ना, ऑल राइट। सो हमारे पास जो अपलिंक पोर्ट होता है, जैसे मान के चलो कि इथरनेट 0x2 का जो पोर्ट हमारा, सॉरी, Hi Pankaj sir, I am Gaurav here. हाय गौरव जी, हाउ आर यू? I am good. पंकज जी मैं ये कह रहा था, मेरा एक्चुअली मीटिंग चल रहा था माइग्रेशन का, करीब वो हाफ एन आवर के जगह 1.5 आवर्स हो गया, तो मैं कुछ देख नहीं पाया हूँ, जस्ट लॉग इन किया हुआ था मैं। तो मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि इसका एक्सेस, मुझे लैब का एक्सेस नहीं मिला है इसका भी। मिल जाएगा गौरव सर, आपको लैब का एक्सेस मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात अच्छा नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग कब तक आ जाएगी सर? कल मिल जाएगा रिकॉर्डिंग आपको। कल मिल जाएगी ना? हाँ, एक्चुअली कल माइग्रेशन था, उसमें फायरवॉल भी कनेक्ट था एचडी एक्सेस स्विच में, तो उसी का कॉल चल रहा था मेरे साथ। कोई दिक्कत नहीं, कोई रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। मस्ट वॉच, रिकॉर्डिंग जरूर देखना आप लोग, जो मिस कर दिए हो ना, देखना जरूर, क्योंकि बहुत मैंने बेसिक फंडा चीजें कवर किया है, एंड विल ट्राई टू कवर दिस बेसिक थिंग। अभी 1-2 क्लास और ऐसा ही चलेगा, ठीक है। अभी तक हमने कंटेंट स्टार्ट भी नहीं किया पालो अल्टो का। ओके ओके। सो कमिंग टू द पॉइंट रणवी, सो हमारे पास ये इंटरफेस है, यू कैन सी हमारे पास 2 तरह का ट्रैफिक है कि हम इनपुट एंड आउटपुट। हमेशा जब हम बात करते हैं आउटपुट, मतलब हमारा ट्रैफिक यहाँ से बाहर जा रहा है, इन मतलब ट्रैफिक आ रहा है, तो कभी भी आपका इन ट्रैफिक, जैसे ये पीसी पैच अपडेट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपका ट्रैफिक ये एकदम से बढ़ जाए, बट इतना नहीं बढ़ेगा कि आप ओवर यूटिलाइज हो जाओ, क्योंकि अगर आप नेटवर्क डिजाइनर हो, आपने देखा है कि मेरा एप्लीकेशन पैच अपडेट करने में 90% यूटिलाइज हो रहा है, स्टिल आपके पास 10% का बफर होना चाहिए। और ये भी आप प्रोडक्शन टाइम में तो करते नहीं हो, नॉन प्रोडक्शन टाइम में पैच अपग्रेड करते हो ना, क्योंकि प्रोडक्शन टाइम में अगर आप प्रोडक्शन पैच अपग्रेड करोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी मेक सेंस, क्योंकि आपका नॉर्मल ट्रैफिक है वो आपका किल होगा। सो ऑलवेज पैच पहले आपका होता है नॉन वर्किंग आवर में। सो अब वर्किंग आवर में अटैक होता है, मान के चलो, सो आपका एवरेज आपका ट्रेंड होता है, आपका टूल होते हैं कि मेरी यूटिलाइजेशन कितनी है डेली का। सो यू कम टू नो 60% यूटिलाइजेशन है, 70%, यही एवरेज रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन का यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, 60 to 70% पर डे का। सोलर विंड यूज करता था तो वहां से निकाल लेता था। हाँ, सोलर विंड से। सो यू कैन पुल आउट द रिपोर्टिंग, बट सडनली आप देखते हो कि यार मेरा रिपोर्टिंग का जो नॉर्मल बिजनेस आवर में 100+ 100% जाने लगा, तो समथिंग इज रॉन्ग। सो दिस इज ओनली इंडिकेशन कि आपके पास कुछ अटैक हुआ है, डॉस अटैक, क्योंकि उस केस में आपका यूटिलाइजेशन एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये तरीका होता है बेसिकली। हाँ बताइए। क्या होता था सर, कई बार ना पीओसी चल रही होती थी साथ में, तो पीओसी चलती थी, उनका डेटा भी जाता था और विंडोज अपडेट या बैकअप भी लगा देते थे साथ में। तो सोलर विंड से मुझे पता लग जाता था कि हाँ किस सिस्टम पे ज्यादा जा रहा है अभी। लेकिन सोलर विंड आप एप्लीकेशन में तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा हमारा टॉप टॉगर है, कौन सा एप्लीकेशन मेरा किल कर रहा है, तो वो भी आपका, अब आपको अनोन से ज्यादा ट्रैफिक आने लगेगा किसी रीजन से, अनोन आईपी से, अनोन एप्लीकेशन के, तो यू कम टू नो कि दिस इज नॉट माय एप्लीकेशन, दिस इज नॉट माय आईपी एड्रेस। तो एक हिंट मिल सकता है आपको, राइट? अग्री कर रहे हैं मेरी बात से? राइट सर, राइट। हाँ सर एक छोटा सा डाउट। बिल्कुल बताइए। मेरे मैनेजर कहते थे सर कि एक मिनट रणवीर जी, मुमताज मैम का एक क्वेश्चन एक ले लेते हैं, फिर यू कैन अगेन आस्क। किस मुमताज जी बताइए। सर आप पाला ऑल्टो सीखे तो Zscaler पे काम कर सकते बोले ना? इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, ठीक है। आप पालो अल्टो सीख कर आप सिक्योरिटी, राइट, और साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स को आप अच्छे से सीख सकते हो, सिक्योरिटी प्लस साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स को, राइट, जो मैं बात कर रहा हूँ। बट Zscaler की प्रोडक्ट पे काम करने के लिए आपको Zscaler प्रोडक्ट के बारे में, उसके इंटरफेस के बारे में ऑलमोस्ट सारे काम करने का तरीका सेम है, राइट। यू कैन कोरिलेट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल नहीं सीख पाओगे, आप चीजों को कोरिलेट कर, लेकिन Zscaler का इंटरफेस जो है ना वो अलग है थोड़ा सा। तो आपको Zscaler प्रोडक्ट पे आपका थोड़ा सा, आपको कम से कम
एक्सेस होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप हाथ पैर उस पर चलाना पड़ेगा। नहीं सर, थोड़ा सा ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट में Zscaler पे वर्क है, लेकिन मैं नहीं करती, मेरे टीममेट्स करते। जो एक साइट का रन बुक देते, वो साइट में एक वर्चुअल आईपी लेके उन्होंने वीलैंस को ऐड करते सर वो साइट पे। अच्छा अच्छा, हाँ, वैसा राइट। है Zscaler पे काम। तो देखो बेसिक चीज तो आप कर सकते हो, अगर आपको एसओपी है, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी, रन बुक ऑलरेडी है, सो यू कैन डू, एंड आप उसको कोरिलेट कर सकते हो कि ये क्या हो रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, जिस कलर पे काम करने के लिए आपको जिस कलर की थोड़ी सी फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, मतलब कि जिस ओके कलर सर। प्रोडक्ट क्या होता है, इसका ओवरव्यू डैशबोर्ड कैसा दिखता है। जैसे Palo Alto का आप लोगों को पता नहीं, मैं दिखाऊंगा एक एक करके। वैसे जिस कलर किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको काम करना है तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में तो नॉलेज होना चाहिए। देन यू कैन कोरिलेट द थिंग्स कि हाँ वहाँ पॉलिसी बनती है, यहाँ पॉलिसी बनती है, वहाँ फाइल ब्लॉकिंग होती है, यहाँ भी होती है, वहाँ भी हाँ आप सर, वायरस हाँ। प्रोटेक्ट करते हो, यहाँ भी होता है। तो वो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन डैशबोर्ड का एक्सेस होना चाहिए। तो आप अगली बार से लॉग इन करके देखना, जो मैं यहाँ बताऊंगा वहाँ पे आप रिलेट करने की कोशिश करना। देन यू ग्रेजुअली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। जो ठीक हमारे है। प्रोजेक्ट में पूछते रहते सर, टनल अप हो रहा क्या बोल के जो मेरे को समझ में नहीं आता, वो एक वर्चुअल आईपी लेके टनल अप बोल के कैसा बोलते बोल के। हाँ नहीं नहीं, समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये कीप लर्निंग, जो हम्म, भी ट्राई आप कर रहे हो, Palo Alto सीखो आप। अभी जो CCNA CCNP चल रहा है, यू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, आप टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे आप सीखोगे, देन यू कम टू नो कि हाँ ये सारी चीजें क्या होती हैं। राइट। आई टेक वन स्पेशल सेशन इसी बीच में हम लेंगे, Zscaler के बेसिस पे लेंगे, जिसमें हम सिर्फ Zscaler के बारे में बात करेंगे, और उससे कैसे हमारी Palo Alto से टनल बनती है, कैसे राउटर से हमें टनल बनती है, कैसे Zscaler पे हम ट्रैफिक फॉरवर्डिंग करते हैं। तो मैं हम्म, आप लोग एक सेशन लूंगा, प्रोबेबली इसी वीक या नेक्स्ट वीक में लूंगा। तो ओके थोड़ा सा मैं सर। आप लोग आइडिया दे दूंगा कि बिकॉज आई एम द इंस्ट्रक्टर ऑफ Zscaler एज वेल, तो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये छोटी छोटी चीजें क्या होती है, वर्चुअल आईपी क्या होता है, टनल्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, जीआरई क्या होता है, आईपी से टनल कैसे बनती है, पैक फाइल क्या होता है, जीसीसी क्लाइंट कनेक्टर क्या होता है। तो एटलीस्ट आप लोग को इतना आइडिया हो कि हाँ कुछ तो आता है मुझे, कोई ऐसा बोले तो हम मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैं कुछ तो बोल सकता हूँ। राइट। हम्म। ओके। यस मिस्टर रणवीर, कुछ आप पूछ रहे थे, यू कैन कंटिन्यू, और एनी अदर वन वांट टू डिस्कस कैन डू। नो सर, माय साइड नो। ओके, दैट्स गुड। Any other question, guys, or we are good to close this session, right? Because I believe ये इस तरह की लैब आप लोगों को मिलेगी, आप लैब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो आप लोग इंटरनेट से, and you can just have a discussion. Any, do you have any question you want to ask? Hello Any, good morning. I believe you able to hear Annie? You want to ask something? Yes, you can hear me. I can hear, but not very clear. Okay, can you hear me now? Yeah, it's better now. Yeah. Okay. Yeah. So I have one question. So the Zoom link, is it gonna be same Zoom link every day, or like is it No, different? it's a temporary. This week will be the temporary. From next week onward, the permanent Zoom link will be the shared. Okay, for everyone. Okay. So, So and when will be the when will we start the actual lab class? I mean lab section. this Friday we're having the firewall configuration class. So we start with the this initial configuration of the firewall. So the firewall configuration will start from this Friday. We're having the actual configuration of the firewall. So we'll start from here. Okay. So this Friday Okay. we'll start the initial configuration of the firewall. So like I request everyone to join, because this is the baby step to just how to configure the Palo Alto firewall from a scratch. I'll tell step-by-step process how the firewall is going to configure, how the console is going to be taken, how the GUI access is going to be taken, और क्या हमारी firewall में default configuration होती है ना, how it is going to be configured. So we'll discuss each and everything this Friday. So don't miss my class this Friday. Okay. Okay, Pankaj sure. sir. Yes. Yes, please. Yes, I'm Gaurav here. So I want to know when I will get the notes and like books, ebook for the Firewall Alto. So I will just read it and understood all the things. I'll discuss your case, after this meeting. Okay. Definitely you'll Okay. get very soon, today or might be tomorrow. Anyhow, we'll Yeah. get that. Okay. Okay. No, sir. Okay. So one quick question. Yes, Sheikh, बताइए. Yeah. The sorry, the Panorama is a part of the class or what? Yes, the panorama, you'll get the complete understanding the panorama, even you'll get the labs. Only Okay. one issue we having in the panorama, because the panorama device, we don't have the lab. So all 100% feature cannot be tested. But Yeah. I'll tell each and every concept. If you're having the already panorama, so I'll tell you how the device can be added in the panorama, how the object group can be created, what is the pre-rule, what is the post-rule, what is the licensing is going to happen, and
ऑब्जेक्ट ग्रुप कैसे बनता है, शेयर्ड का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा पैनोरामा के अंदर. So this is the only lab which is not going to 100% completed due to the license is very costly. Okay, so this is the reason we don't have. But if you having a license based panorama you want to share, I can explain each and everything. But rest of the things like even the global protect, you can see here global protect lab is going to be 100% completed, IPsec, everything. So none of the content is going to be without lab. So even panorama is also having lab, but it's a 90%, I can say 10% part, probably due to the unlicensed it is not going to work. And the all rest of the configuration, even we having the license based firewalls where everything can be tested, so no need to worry about that. Okay. Okay, so two more questions which I got in the interview. So Okay. interviewer asked me what is the difference between Cisco ASA, no, Cisco ASA and Cisco and a Palo Alto Firewall. So I told them, so Palo Alto Firewall is a stateless and no, firstly I told them to Cisco ASA earlier it was a stateless, now it is upgraded to like stateless, and the another one is Stateful. stateful, yeah. Stateful, yeah, you're right, right. Earlier it was a stateless and now it is upgraded to stateful. So he told me you are wrong, earlier it was a stateful, like No, he asked me like that. your interviewer was probably, I'm not going to blame, but Yeah. I'll cover this stateful firewall feature and a stateless firewall feature. When I'll compare that, so if I'm talking about the next generation firewalls, even the Cisco ASA next generation firewall, I'm talking about the next like legacy firewall, they all are the stateful firewalls. Yes. They maintain Now it the is states. upgraded to stateful. Earlier it was a stateless, right? Yes, stateless firewalls. So I'll discuss this special, what is the stateful, because this is the bad question of the interview. आप अगर interview देने जाते हो, this question must be going to be asked. What is the difference between the stateless firewall versus the stateful firewall? And if you don't have the clear answer, probably you will be not able to crack. Okay, so I'll cover these things in one session. Okay, where I'll explain what is the stateful and stateless. Yes. What is the second question? One interview asked me about the what is the difference between a UTM and NGFW. So UTM, yeah. I told them, so I don't know about the UTM, but and I told about the NGFW only. So you know NGFW, right? Yes. So UTM is nothing. It's again like it's like a module. UTM is the Unified Threat Management module, right? Yes. So it's like how to manage your threats, right? Like info says like what any threats, like whatever the threats I discussed, like you can see that's malware, phishing activity, any Trojan activity, any kind of the vulnerability. So how the threat is going to be managed? There is two module, IPS, IDS, UTM. These are the part of the interrelated. But when you talk about the next generation firewall, these in Palo Alto, these everything, no need to buy any IPS, IDS module, right? Or UTM module. These all are integrated in next generation firewall in the Palo Alto. So you can see, if you go in the Palo Alto firewall, you'll find the antivirus scanner. It is going to take a scan that your virus, and based on the scanning, they are going to take an action. Anti-spyware, vulnerability, like URL filtering, DOS, wildfire, zero-day attack. So everything is going to happen in the next generation firewall without installing any kind of the additional modules, right? No, nothing. And single dashboard, you can see every logs, every vulnerability, every kind of like whatever happening in your network, like ACC command center, application command center in available in the Palo Alto file. Later I'll show you. Those are all are going to show the 360 view for the regular basis what is happening inside of your network. So no need additional any kind of UTM module to just manage those things. Okay. Yeah. Thank you. Welcome. सर मैंने कुछ मैसेज भेजे बार देख कर लेना. अच्छा मैंने नहीं देखा क्योंकि ओके सो सर कंटिन्यू क्लास फ्राइडे से होगी. नहीं Wednesday we have one base session again. This Wednesday we having the one base session again. Probably I'll discuss the stateful and stateless firewalls, and you guys can ask any questions like today. And from Friday we'll start doing the firewall configuration. Okay. ये कल क्लास नहीं क्या? नहीं कल नहीं है, वेडनेसडे को है. वेडनेसडे को है. वेडनेसडे और थर्सडे भी होगी, फ्राइडे भी होगी? नहीं वेडनेसडे के बाद फ्राइडे के. इस वीक 3 क्लास है, नेक्स्ट वीक से 4 क्लास होंगी. अब अच्छा आज क्लास है, हाँ मंडे टू थर्सडे रेगुलर होगी. अभी इस वीक 3 क्लासेस हैं, आज एंड वेडनेसडे एंड फ्राइडे. बट नेक्स्ट वीक यू विल गेट द ओनली 4 क्लासेस मंडे टू थर्सडे.
अगर कोई मिस होता है देन विल डू द फ्राइडे, ओके। अच्छा आप पूछ रहे हो कि सर मेरा एक इंटरव्यू हुआ था। I'm sorry, which day was it? Like Thursday, Wednesday? I mean Wednesday, Thursday, and Friday. This week only we having a class. Today I have one class, Wednesday having a second class, and Friday having a third class, okay? This So week. we won't have class on Thursday, right? No class on Thursday. Okay. But next week onward, from next week, Monday to Thursday, regular 4 class we have. Friday no class. Okay. Gotcha. Okay. So today in this week only on the Thursday or also in the tomorrow? No, tomorrow there is no class. This week, let me just open my calendar. Okay, sure. This week Monday we have class. Next class we having a Wednesday, and after that we having the Friday. Okay. Okay. From next week onward, all class will going to have Monday to Thursday. Okay. All classes will going to happen. Okay. This way. Okay. So प्रीतम पूछ ही लो ना आप, मैं कब तक पढ़ूंगा, कोई दिक्कत है पूछने में? लंबा चौड़ा मैसेज है। एक्चुअल में क्या था कि हाँ। एक मेरा ना इंटरव्यू था रेली गियर के साथ आज ना। हाँ ठीक है। तो उसमें उन्होंने मुझसे रियल टाइम बेसिक क्वेश्चन पूछे थे सारे के सारे। अच्छा तो ठीक है। वो अब एक आध तो मैंने आंसर गलत दिया, लेकिन मोस्टली सारे ठीक थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको मैं सेकंड राउंड के लिए भेज देता हूँ आपका नाम, तो आपका सेकंड राउंड होगा और वो उसमें टेक्निकली से भी ज्यादा क्वेश्चन टफ पूछे जाएंगे। अच्छा। क्योंकि अब जितना मैंने सीखा वो तो मेरे हिसाब से अब एक हद तक बेसिक है या फिर बहुत हद तक है, लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछो तो आंसर दे दूंगा, लेकिन अगर रियल टाइम से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे तो हाउ कैन आई आंसर। तो मुझे वही चाहिए, हेल्प चाहिए। बीस सर से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि तो जस्ट रियल टाइम क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। रियल टाइम क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि लेट्स सपोज यू हैव टू कॉन्फ़िगर अ फायरवॉल, राइट? जो आप ये क्लास आपने नहीं किया है तो आप कैसे बता पाओगे फायरवॉल का स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? क्या प्रीरिक्विजिट होती है ना, आप नहीं बता पाओगे ना, राइट? नहीं। ठीक है, आपसे मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द अप्लाइंग द सिक्योरिटी पॉलिसी इन द पालो अल्टो फायरवॉल, और किसी फायरवॉल कैसे सिक्योरिटी पॉलिसी में अप्लाई करते हैं, पॉलिसी मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या उसका क्राइटेरिया रहता है? हैव यू डन दिस क्लास? हाँ की थी, नहीं ये वाली नहीं की थी, स्टार्टिंग क्लास की थी। तो ये नहीं किया था आप, तो नहीं बता पाओगे, राइट? पर मैं इसकी रिवीजन कर चुका हूँ, तो मैंने इसके आंसर दे दिए। मैं बता रहा हूँ, देखो दीज आर द थिंग्स, ये रियल टाइम क्वेश्चंस है। व्हाट आई एम आस्किंग, इफ आई एम गोइंग टू आस्क कि व्हाट इज द वर्चुअल राउटर इनसाइड द पालो अल्टो फायरवॉल एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर। उन्होंने सर क्वेश्चन पूछे थे, मैं आपको दो बताता हूँ। एक तो जो मैंने अभी आपसे पूछा एचए वाला, कि अगर एचए है और मैं अगर अपना ओएस अपग्रेड कर रहा हूँ तो क्या दूसरे में अपग्रेड होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था, वो भी ये था कि मेरी कंपनी है, मेरे पास सर्वर रखा इन हाउस है, उसमें वेबसाइट है, तो मेरी कंपनी में तो कोई भी उस वाले सर्वर की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा, वेबसाइट को। अच्छा ठीक है। तो आंसर तो मैंने दे दिया कि पहले तो मैं चेक करूंगा अपने यहाँ से, वही जो ट्रेस रूट के थ्रू कि मैं गेटवे तक जा रहा हूँ, नहीं जा रहा। दूसरा मैंने कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पोर्ट ब्लॉक हो मेरे सर्वर पे, टीसीपी वाला जो एचटीटीपी सर्वर पे नहीं, फायरवॉल पे। नहीं, फायरवॉल का तो मैंने बोल दिया कि मैंने चेक करूंगा। उसने बोला कि फायरवॉल पे ट्रैफिक अलाउ हो रहा है, फायरवॉल पे ट्रैफिक बाहर जा रहा है, लेकिन वो आपको वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। हाँ, तो ऑब्वियस है कि वो कहने के सर्वर पे उसका पोर्ट ब्लॉक होगा, एचटीटीपीएस वाला, टीसीपी वाला। आईपी आपके सर्वर पे पोर्ट अलाउ नहीं हो, आईपी वाइट लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। कई बार जो सर्वर्स होते हैं ना, आईपी वाइट लिस्ट करना पड़ता है। तो अगर आपका सोर्स आईपी जो भी पब्लिक आईपी, जैसे कई सारे कंट्री होते हैं, इंडिया में जैसा, ठीक है, इंडिया के इनकम टैक्स की वेबसाइट है, मेरे इन हाउस ही है, सर्वर मेरे इन हाउस ही है। तो इन हाउस होने के बाद भी मैंने ये बोल रखा है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे ये क्या बोलते हैं कि हमने एक टोपोलॉजी डिस्कस की थी जिसमें मैंने डुअल नेट बताया था ना आपने। तो मैंने बोला था कि मेरा सर्वर ये पर्टिकुलर सर्वर मेरे इसी आईपी से एक्सेस होना चाहिए, राइट? अगर वो आईपी नहीं लेके जाएगा तो वो उसी को बोलते हैं आईपी वाइट लिस्टिंग। सो इफ यू आर नॉट गोइंग विद दिस आईपी एड्रेस तो वो भी नहीं एक्सेस होगा, आपका पोर्ट अलाउ नहीं होगा तो भी नहीं एक्सेस होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा जो सर्विस है दैट इज अलाउड इन माय सर्वर, और मेरी जो सोर्स आईपी लेकर आ रहा है उससे क्या उसका एक्सेसिबिलिटी अलाउ है। तो अगर नहीं अलाउ है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ब्लॉक। हाँ, अगर फायरवॉल सही है। हाँ जी, पर सर वो एचआर ने आंसर ये सुनना चाह रहा था जो मैंने दिया था कि वो वाला पोर्ट ब्लॉक वाला, कह रहा एब्सोल्युटली राइट। सर मे बी आईएसपी का इशू भी हो सकता है। कौन सा? नहीं, लोकली होस्टेड है, लोकली है, मेरे ही इन हाउस का है वो। तो ये तो सारा बता दे, तो उसी टाइप के सर क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि दोबारा पूछेंगे। So these are the, Pritam, trust me, whatever the
टोपोलॉजी आई हैव डन अ डिस्कशन जो हम करते हैं, दीज आर द रियल बेस्ड सिनेरियो ओनली, कुछ भी ऐसा हवा में नहीं है। दिस ऑल टोपोलॉजी एच इज रियल टाइम, पॉलिसीज रियल टाइम, यही चीजें होती है रियल फायरवॉल में, अलग से नहीं होती है। तो हमारी माइंडसेट में ये निकाल देना टोपोलॉजी हम जो भी कर रहे हैं दैट इज अ वर्चुअल, हम लैब कर रहे हैं, दीज आर द रियल लैब्स। एक्चुअली जितना हम यहाँ कर रहे हैं ना उसका 10% भी प्रोडक्शन में आप नहीं करते हो, ट्रस्ट मी। बिल्कुल सही कह रहे हो, सारा आप 10% भी आप नहीं करोगे अपने प्रोडक्शन में, आपको सिर्फ एसीएल बनाने को मिलेगा, पॉलिसी बनाने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव बनाने मिलेगा, कभी आप ओएस अपग्रेड कर दोगे, कभी आप एचए फेल ओवर कर दोगे। जो एचए कॉन्फ़िगरेशन है, फेल ओवर टेस्टिंग है, लिंक मॉनिटरिंग, पाथ मॉनिटरिंग, आईपी सेक्टरल क्रिएशन, ग्लोबल प्रोडक्ट क्रिएशंस, बाकी पॉलिसी, वल्नरेबिलिटी प्रोडक्शन, एनटीएस स्पाईवेयर, जो हम टेस्टिंग किए हैं ना, दैट इज probably जो L4 के बंदे होते हैं they also not get that much time to just do all testing, क्योंकि वन टाइम डिप्लॉयमेंट होता है। जिस टीडी ने आपको बना के एक बार दे दिया वो बन गया, अब वो अलग गया। जब तक उस पर कोई मेजर मॉडिफिकेशन नहीं होता, वो भी मॉडिफिकेशन होगा तो ऑपरेशन के बंदे बहुत कम करते हैं, दे आर डन बाय द हायर लेवल ऑफ द इंजीनियर्स। तो दिस इज समथिंग कि हमें ये दिमाग से निकाल देना है कि इंटरव्यूअर को ये हमें बताना है कि आई एम इंजीनियर, आई हैव डन माय रियल पालो अल्टो फायरवॉल, ये रियल ही फायरवॉल है, कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा। आप ये रियल फायरवॉल खोल के देख लो, एक साथ बैठ जाओ, और वर्चुअल आपको सेम ही सब कुछ दिखेगा। तो ये सब कुछ रियल ही हमारा है, ठीक है। तो ये दिमाग में बात नहीं रखना, ठीक है। प्रीतम बिल्कुल कॉन्फिडेंट कि मैंने रियल पे काम किया है। मॉडल याद कर लो, कौन कौन सा मॉडल है ये देखो, ये याद कर लो मॉडल। मैं बता रहा हूँ फिर से, ये याद कर लो कि ये मॉडल है 220 फायरवॉल पे मैंने काम किया है, 820 पे काम किया है, बोलो 3220 पे मैंने काम किया, 7050 पे काम किया है। तो आपको बोलना है ये सारी चीजें। खान कुछ बोल रहे थे आप? 220 बंद नहीं, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। 420 आ गया, 220 आ गया है, लेकिन अभी भी इन सपोर्ट में है, एंड ऑफ लाइफ हो गया। लेकिन जिसका चल रहा है उसका चल रहा है, अभी भी सपोर्ट है, इसका सपोर्ट बंद नहीं हुआ, बट सेल इसका बंद हो गया, 420 आ गया। सर एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि नेटवर्क में कितनी फायरवॉल लगी है? एक मिनट, एक भाई, एक खान जी आप कंक्लूड कर, हाँ, एक आपके नेटवर्क में कितनी फायरवॉल लगी है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपके नेटवर्क में फायरवॉल डिपेंड करता है ना कि कितनी साइट्स हैं। एक साइट पे, जैसे एक साइट होती है मिनिमम, उस पे 2 फायरवॉल हम लगाते हैं, एक आपका एक्टिव होता है, एक आपका पैसिव होता है, ठीक है। तो ये जनरल आर्किटेक्चर होता है जो आपको ग्लोबल इंडस्ट्री फॉलो करती है। एक फायरवॉल नहीं लगाती है, 2 ही पेयर में लगाते हैं, एचए में कन्फिगर करते हैं ताकि एक डाउन हो दूसरा ले ले। तो एक साइड पे आपकी 2 फायरवॉल, अगर 100 साइट है 200 फायरवॉल लगेगी आपकी, यही होगा आंसर इसका। तो आपको इस तरह से बताना है कि लाइक दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस कि इन आवर नेटवर्क्स वी जस्ट हैव द एचए फायरवॉल्स नीड टू बी कॉन्फ़िगर्ड, जिसमें 2 फायरवॉल्स लगती हैं। तो वन साइड हैविंग 2 फायरवॉल्स, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल कि माय ऑर्गेनाइजेशन हैविंग 100 ब्रांचेज, सो 100 फायरवॉल्स लगेंगे, 200 फायरवॉल्स लगेंगे। इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा। ये सब फेक क्वेश्चंस होते हैं, राइट। आपको सिर्फ ये समझने के लिए कि आप कितना सोच पाते हो, लॉजिकली कितना आंसर दे पाते हो। सर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे लास्ट कौन सा ऐसा आपने ट्रबल शूटिंग करी है कि जिससे आप करके थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करा, या आपने हैप्पी हो आप करके, तो स्टेप बाय स्टेप बताओ कौन सी। इसके लिए तो फिर मेरी क्लास ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी आपको, तभी पता चलेगा कि लास्ट ट्रबल शूटिंग आप कौन करके आया। मैं ट्रबल शूटिंग करके बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। प्रीतम किया था ना हमने? प्रीतम हाँ जी लास्ट वाला। तो ये तो बता दोगे ना आंसर, कैसे डिबग, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे थी? हाँ, कैसे मैंने आंसर में भी ये दिया था ना कि भाई अगर मेरे ट्रैकिंग जा रहा तो मैं पहले पैकेट कैप्चर करूंगा, उसके बाद अगर नहीं भी होता तो भी डिबग करके बताऊंगा कि कहाँ पर इशू है, कहाँ पे एग्जैक्ट इशू, राइट। सो बिल्कुल ये तो हमारी यूएसपी है। ये तो हम ऐसे सीखेंगे कि आप लोग को बिल्कुल जिंदगी भर याद रहेगी चीजें, क्या क्या है, पैकेट कैप्चर कैसे लेना है, डिबग कैसे लेना है, कैसे उसको पैकेट को, ये आखिरी वो तो सब दिमाग में छप गई जैसा आपने बताया। हाँ, क्या शेख जी बताइए। हाँ जी we बताइए। can't do the debug in the production, right? Because it utilizes more and more RAM and all these things. Completely agree. So we discuss multiple scenario. हम डिबग किस स्टेज पे जाके करेंगे, that we also discuss. This is the last resort कि जब हमारे सारे टूल खत्म हो गए and we not able to troubleshoot, that is the last gateway of resort कि हमारे पास डिबग करना है. So we have to take the cautious window. We have to inform our management team, and then you have to do the debug. It is not recommended to do in the any production environment debug. So वो चीजें हम डिस्कस करेंगे कि किस केस में डिबग करना है. You are absolutely right. बट उससे पहले क्या क्या चेक करते हैं, उस पर क्या क्या लिमिटेशंस होती है पैकेट कैप्चर्स में, क्या क्या हमारे नॉर्मल ट्रबल शूटिंग में लिमिटेशंस होती हैं, और किस तरीके से डिबग इज गोइंग टू गिव द 100% करेक्ट आंसर, वो चीज हम देखेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर टैक में भी इंजीनियर बनते हो तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। समझे शेख? Yeah, thank you. Hello. Yes, please. Good evening, sir. Good evening, Sir, Pankaj ji, actually बताइए। today is my first class.
ओके, वेलकम टू क्लास। हाँ, तो सर मैंने अभी क्वेरी डाली थी, तो मेरे पास आज डेमो के लिए आया था ये, तो मैंने ज्वाइन करा था। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने अभी कितनी क्लासेस स्किप कर दी हैं क्या? कोई क्लास स्किप नहीं की अभी तक आप। चलो, ये सब बेसिक फंडामेंटल क्लास हो रही हैं। पीछे के 1-2 क्लास हमने बेसिक फायरवॉल के बारे में हमने बात किया था, राइट? तो वो आपके रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। जस्ट यू अंडरस्टैंड कि हम क्या प्रोडक्ट करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट क्या मतलब। अभी ऑफिशियली हमारा सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक थिंग्स, राइट? एक फाउंडेशन कोर्स होता है ना, वो हम कर रहे हैं। द मेन क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फ्राइडे, ओके? सो वो मिस मत करना आप लोग, ठीक है? फ्राइडे तक आप लोग को कोई क्लास, फ्राइडे के बाद कोई क्लास मिस नहीं करना है। इफ यू आर मिसिंग द क्लास, you are losing the valuable information from my तो सर side. अब नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे पास कैसे आएगा, या मुझे क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा सर, उसका प्रोसेस थोड़ा? हाँ, मैं आपके पास जिस नंबर से मैसेज आया होगा ना, उस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिएगा आप, राइट? यस सर। आप मैसेज डाल दीजिएगा, आपसे कोई ना कोई कनेक्ट कर लेगा एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट यस कि कैसे क्या करना, ठीक है? आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आज का क्लास हम क्लोज करें। अगर आप लोग क्वेश्चन आप अभी डिस्कस करेंगे कि बाद में? क्या करना था डिस्कशन? आपने कहा था लेट डिस्कस। नहीं, आपका जो केस है, आई विल डिस्कस विद द सेपरेट टीम, ओके? कि यू विल डेफिनेटली गेट, राइट? क्योंकि आई नो योर केस, सो मैं आपको कराता हूँ अभी जिस क्लास के बाद है, ठीक है? आपसे नहीं, मतलब इंटरनल डिस्कस करके आप यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, ओके? यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? नो सर। So if you guys allow me today, so we can wrap up this meeting for now and we'll connect on the Wednesday. Sure, ठीक है? sure. Thank you so much, Okay, guys. sir. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Take care. Take care. Bye-bye. Bye-bye.